Welcome students to this class. Today let us discuss about federalism in India. It is coming under your syllabus Unit 2 chapter 1 and today we will discuss about federalism and the meaning and features of federalism in India, meaning and features of federalism, modes of federation and India as how India as a federal state, the union state relations, specifically we will deal or will discuss about legislative relations. So, so far as federalism is concerned, it is a form of a government in which the territory, the same territory is controlled and governed by two level of a government. One is the union government, another is state governments. So, the union government is governed throughout the territory, but state governments they are administered with specific units or cantons or provincial provinces or states. So, it is vary from country to country, the names are vary from country to country. So far as the unitary state is concerned, on the basis of a concentration and distribution of powers, we can divide governments either it is a federal form of a government or unitary form of a government. क्षमतार केन्द्रीकरण एवं विकेन्द्रीकरण को लेकिन सरकार को आम दि भाग बांटी पारिबा, गोटे हूँ संघीय सरकार आ गोटे हूँ ऐकिक सरकार. तेणु यूनिटरी form of a government there is a single central government and it is the single central government controls throughout the territory of the concerned state. So, though there are certain regional governments, local governments, they derive their power from the central government and it depends upon the mercy of the central government and it can increase or decrease or withdraw the powers of the states at any time. So, there is no constitutional supremacy, there is no the constitution is not supreme and in unitary form of a government the parliament is supreme. For example, you can take the example of United Kingdom or normally we call it England. So, there is a unitary form of a government and there is unwritten constitution. The constitution is not supreme. The parliament makes law and it is it can make any law, any type of a law, because the power is given by the constitution to the parliament and the British parliament is so powerful that it can make anything under the sun except the man a woman and woman a man. गोटे स्त्री लोक को पुरुष लोक कि पुरुष लोक को स्त्री लोक ब्रिटिश पार्लियामेंट करें किंतु अन्य सब किसी करें. इट सीम्स दैट हाउ पावरफुल द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज. सो देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी. बिसाइड्स दैट in the unitary state the constitution is very flexible because the union government can change any time whimsically, it can make law any time whimsically. So, the judiciary cannot question the parliament or the parliament of England. So, besides that there is a uniform system of law. So, one country, one nation, one type of a law, or uniform system of a law you will find in Britain. There is no differences of law or there is no division of law. So, that is why British parliament is unitary, by Britain is known as a unitary form of a government. You can take the example of China. China also a unitary state. In a unitary state there may be a unicameral legislature, there may be a bicameral legislature, but in England there is bicameral legislature like House of Lords, House of Representatives. In China, National People's Congress, the legislature of China, there is unicameral legislature. So, in unitary state there is single citizenship, single constitution and so that is why unitary state the people are governed by similar or uniform system of law. So, let us discuss about the federal form of a government. In a federal form of a government there is a dual administration because there is a one government is for the whole country, the other government is for the states. So, as a result of which there is two levels of a government. One is at the central level, that is the union government, and there are other governments in the states. Besides that, there is a constitutional division of a power in a federal form of a government.
गोटे संघीय राष्ट्र आम देखा संविधान रे क्षमता बंटा है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार ऑल द इंस्टीट्यूशंस दे डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान समस्त क्षमता प्राप्त होता है बिकॉज जस्ट लाइक द माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन बॉडी सो जस्ट लाइक दैट it is just like the sun around which all other planets derive their power from the sun. Just like that, in a federal form of a government, the constitution is supreme. All institutions, all national government or state government, they derive their power from the constitution. There is a constitutional division of power, there is a judicial supremacy, there is a double constitution. One constitution may be for the whole country and there are other constitutions for the respective state governments or cantonal governments or provincial governments. There is double citizenship and there is differences of law. So, that is why so far as the this is the there is distribution and division of power in a federal form of government. So, let us discuss about how federation is originated. The very word federation is derived from the Latin word known as foedus, F-O-E-D-U-S, foedus. Its meaning is treaty or agreements. So, the federation is an outcome of an agreement or freely signed between the concerned parties between the country and the constituent states or between the states. So, one of the important definition relating to the concept of federalism provided by Alexander Hamilton, one of the co-authors of the Federalist paper, and he was one of the fathers of American Constitution, and he provides a important definition, and that definition is a federation is an association of states that forms a new one. ये हूँ राज्य मानकर बा राष्ट्र मानकर सम्मेलन जो थी कि गोटे नुआ राष्ट्र सृष्टि हुए. इट इज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इट इज ए फेडरेशन इज एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स दैट फॉर्म्स ए न्यू वन. सेड दैट like that another important constitutional expert and a theorist and a Australian academician, he was no other than Casey Hoyer. Casey Hoyer remarked that the power of the government are divided between a government for the whole country and governments for the parts of the country, and in such a way that each government is legally independent within its own sphere. So, that is why there is a division of a power. One government is for the whole country, the other governments are for the units or states. So, let us discuss another important philosopher, he was known as A.V. Dyce. He provides important definition and he was a British jurist, and he said that what is federation? Federation as a political contrivance intended to reconcile national unity and power with the maintenance of rights. So, if you will analyze his definition, then you will find that he said that there is two sets of a government, one is a national government and it possesses the concept of a unity and a power, side by side there is a maintenance of a state rights. So, that is why this is there are different definitions. If you will analyze the definitions, you will find certain features of a federal form of a government. What are the different features of federal form of a government or basic features of federal form of a government? The first, there is two sets of a government. As I told, there is a union government that will make law for the whole of the country, and there is state governments, they can make law for the respective units or provinces or cantons. And so, that is why there is two sets of a government, union government and state government. Besides that, as I told, there is a distribution of power, division of a power, there is a constitutional division of a power in which all are deriving their power from the constitution. They are independent in their respective spheres, and besides that there is a written constitution. In a federal form of a government, there must be a written constitution and everything is given in black and white. सबू लिखित आकार रे जोठी संघीय सरकार अच्छी से सबू लिखित आकार रे थाए. समस्ते संविधान क्षमता प्राप्त हेबे. ऑल विल डिराइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. It is set of rules and regulations through which it is the basic rules and regulations through which the country will be carried out. So, in federal form of a government there must be a written constitution. Besides that, in a federal form of a government you will find there is a rigid constitution.
how will you determine is a rigid constitution or flexible constitution? Because of the amendment procedure. law making amendment procedure is a law making process. आमे संविधान संस्कार प्रक्रिया को नेकी आमे संविधान को दि भाग रे बांटी परिबा. गोटे होची जटिल संविधान आ गोटे होची नमनीय संविधान. So rigid and flexible constitution. So amendment procedure, through amendment procedure we can delete something in the constitution, we can add something in the constitution, or we can repeal something in the constitution by the changing needs of the time. समय अनुसार आवश्यकता मुताबक आम संविधान रे किछि परिवर्तन करि परिबा, किछि जोग करि परिबा, किछि डिलीट करि परिबा. दैट्स व्हाई सो इट इज बट in federal form of a government, the governments are coming just like birds of seasons. They will come and go. They cannot whimsically change the law of the constitution because there is constitutional supremacy. So besides that, in a bicameral legislature you also find the in federal form of a government you can find bicameral legislature. There must be a bicameral legislature. There must be bicameral means two. In the legislature there must be two houses. One house is representing from the people and other house is representing from the states. So there must be a bicameral द्विसदन व्यवस्था थिबो. जोठे संघीय सरकार अछि सेठी निश्चित रूप रे दुई प्रकार दुई गोटे व्यवस्थापिकार निश्चित रूप रे दुईटी हाउस थिबो. गोटे होची राज्यर प्रतिनिधित्व करूथिबो आ गोटे लोकमानकर प्रतिनिधित्व. So there should be a federal balance between the two. And there so like you can take the example of United States of America. The Senate and the legislature of United States of America is known as the Congress. It is consisting of the Senate, the upper house, most powerful second chamber in the world, and side by side the House of Representatives. You can take the example of India, that is Lok Sabha and Rajya Sabha. So that's why in a federal form of a government you will find bicameral legislature. Besides that, you will find independent judiciary. The independent judiciary means the judiciary will not be guided by anyone, and it can, the judiciary is independent, impartial, and it will provide its judgment without any fear, favor, and whether it is the state governments or union government, if they are making any law that will going against the provisions of the constitution, then that will be outrightly rejected, that will be declared null and void or ultra vires. तेणु ताकू रिजेक्ट करिवार क्षमता जुडिशियरी रही. तेणु इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशियरी रही जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बिसाइड्स दैट देयर इज द डबल सिटीजनशिप. A citizen is a person who enjoys both civil and political rights, and in a federal form of a government you become the citizen of a particular state and then you become the citizen of the whole country. That is a double citizenship. Besides that, in some federations, in the federations there must be double constitution, one constitution for the whole country, the other constitutions are for the states, the respective states. Besides that, there is equal representation in the upper house. Upper house, for example, like Senate. So in United States of America there is 50 states, and in the 50 states, so from each and every state, whether it is a big state or a small state, they are sending 2 representatives to the Senate, the upper house of the US Congress. So just like that, you can take the example of Switzerland. There is 23 cantons and they are sending 46 representatives to the upper house of the Switzerland. So these are the different features of a federal form of a government. Let us discuss about modes of a formation of a federation. संघीय राष्ट्र केमिति सृष्टि करा जाई परिबो. दीटा उपाय, तार दीटा उपाय अछि. गोटे होछि centripetal federation, or we can call it the fusion process of making of a federation. Centripetal means केन्द्राभिमुखी, केन्द्र आड़कु तीर चिन्ह गुड़िक जाइछि. So when certain independent states, because of their economy, because of foreign policy, because of security, because of economic development, they surrender, voluntarily surrender their sovereignty and makes a new one, नुआ राष्ट्र सृष्टि करती, ताहाले आमे ताकू सेंट्रिपेटाल बा केन्द्राभिमुखी बल माध्यम तैयारी होता फेडरेशन बोली कहवा, बा ताकू फ्यूजन प्रोसेस ऑफ फेडरेशन अर्थात सम्मिश्रण प्रक्रिया. राष्ट्रगुड़िक मिशीगले तांकर निजर स्वार्थपाई एवं दे सरेंडर देयर सॉवरेनिटी without any hesitation, as a result of which that is known as a centripetal form of a federation or fusion process of making of a
फेडरेशन एग्जांपल्स आर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 13 कॉलोनी थिले देन परवर्ती स्टेज रे से माने जॉइन कले बिकॉज ऑफ द फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जोड़ा कि से माने 1787 till 1789 so they try to make and convince all the 13 colonies and they agreed and they jointly make the federation. And besides that, just like centripetal federation, another type of federation you will find in India and Canada, like for example centrifugal federation. Centrifugal means केंद्र अपसारी तीर चिन्ह गुड़िक देख केन्द्र रु अपसारण हो जाए विदिन द बाउंडरी विदिन द सर्कल सो गोटे राष्ट्र भितर बिकॉज ऑफ administrative convenience, because of diversity, because of plural society, we can divide states, we can divide a big state into different small state for administrative convenience. प्रशासनिक सुविधा पाई आमे गोटे बड़ राष्ट्र को जिते बेले छोट छोट राज्य परिणत करदेबू यूनियन टेरिटोरी करदेबू ताहले ताकू आमे कहिबा फिजन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फेडरेशन बा विभाजन प्रक्रिया जेमिति आमे हाथ मुठाटा को हाथ आंगुठी को पूरा खोला करदेले एटा हूँ फिजन प्रोसेस सो देसी फिजन प्रोसेस ऑफ जो एकत्रित कर दिए सम्मिश्रण प्रक्रिया कहवा बा ताकू सेंट्रिपेटल फोर्स बोली कहवा मेकिंग ऑफ फेडरेशन सो से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पाई बा प्रशासनिक सुविधा पाई आमे जदि किछि सुविधा पाई आमे जदि राज्य गुड़ार विभाजन करदेले देशटा को एवं विभिन्न प्रकार सरकार ताकू शासन करिवार व्यवस्था करदेले ताहाले आमे ताकू कहवा सेंट्रिफ्यूगल way of formation of a federation. Let us discuss proceed towards the concept of India as a federal state. Is India a federal state? So there are certain provisions, there is certain provisions in which we will find that India is a federal state. So let us discuss about that. So so far as the colonial period is concerned, you will find certain hints that Government of India Act 1935, it has a lot of influence among the makers of the constitution, the framers of the constitution of India, because most of the 75% of the provisions of the Government of India Act are reflected in the present constitution, in the new constitution of India. एथिरे आमे कोन पाई परिबा ना the Government of India Act prescribes that India must have a federal form of government with a strong center. गोटे संघीय सरकार हबो विभिन्न because of diversity, because so many pre-insular states were there, the directly administered territory there are certain provinces directly administered territories are there are certain provinces also there. So as a result of which India needs a federal form of government side by a strong center to control all the federating units. So Government of India Act आमरो एथ्रु आमको सूचना मिलुछि Government of India Act गोटे फेडरेशन करिबा पई एथिरे सूचना मिलुछि किंतु जदि आमे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को देखिबा द गवर्नमेंट द अमेंडमेंट बा द आर्टिकल नंबर 1 of the Indian Constitution prescribes that India, that is Bharat, shall be union of states. Nowhere in the Constitution of India you will find that is the use of the word very word federation is there. भारत संविधान रे आमे कोठी फेडरेशन शब्द पाई परिबा नाही किंतु India that is Bharat shall be union of state कहा जाइछ. That does not mean that India is a unitary state. आमे गोटे फेडरेशन द इंटेंशन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स टू मेक इंडिया ए फेडरल स्टेट विथ स्ट्रंग सेंटर ये ऑब्जेक्टिव रखिते. जदि आमे डॉक्टर आंबेडकर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिबा डॉक्टर आंबेडकर हाउएवर फेल्ट दैट बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल ऑल्दो द वर्ड यूनियन इज यूज्ड because the constitution provides a dual polity, that is division of a power. The constitution divides the powers and the use of the union has two advantages in India, because India is not the result of the agreement of the units. Second important one is that the units have no right to secede from the Indian Union. भारत संघीय व्यवस्था जेनेराली आमे देखिबा एटा संघीय व्यवस्था जदि बा यूनियन शब्द व्यवहार करे दुईटी कारण जो आमे व्यवहार करिछु. गोटे कारण हैला जे एटा राज्य मानकर एग्रीमेंट नुहे बा चुक्ति नुहे किंबा राज्य मानकर अधिकार नाही बा यूनिट मानकर अधिकार नाही से माने ए राष्ट्र संघरु अलगा हो जाई पारियो बोली ए जोडी की जोगु आमे जानि के व्यवहार करिछु द कांसेप्ट ऑफ यूनियन बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्रेटर यूनिटी in India. It does not provide the unitary, it was not in favor of a unitary state. So that's why India is a federal state.
So, the framers of the constitution also, because of a diversity, they try to make India is a federal state with a strong center, and there is a debate and a discussion in the Constituent Assembly, and among the members of the Constituent Assembly, they was in favor of a strong center with a federal form of government. Let us discuss about the elements, whether the elements are possessed by the or we find in the federal form of government are remain with the Indian constitution or in India or not. Let us discuss about the elements of Indian federation. The first important point is that is written constitution. In India we have a written constitution. The constitution was prepared according to plan of the cabinet mission, and it was it had its first session in 9th of December 1946, and it took 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution. एटा रावफली आम कहले पाखापाखि 3 वर्ष समय आमको लगिला भारत संविधान तैयारी करिया को पड़िबो, तैयारी करिया को लागिला। एथिरे डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर was chosen as the chairman of the drafting committee. Dr. Rajendra Prasad was elected unanimously as the president of the Constituent Assembly, and it took 2 years 11 months and 18 days, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लगिला आम संविधान को तैयारी करिबा पाई। And the constitution came into the constitution was completed on 26th day of November 1949, and besides that the constitution came into effect in 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 मसीह आम संविधान कार्यकारी गला। इन इंडिया वी हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग इज गिवन इन ब्लैक एंड व्हाइट, सब लिखित आकार दि जाइए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति हूँ, गवर्नर हूँ, मंत्री परिषद हो, नागरिक मानकर क्षमता कौन, सब जिनस भिभिडली लिखाई। तेणु आम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भारत वर्ष, तेणु आम प्रथम क्राइटेरिया फुलफिल करछे। सेकेंड जिनस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द फास्ट रिजिड आगुरी कहि सारी जे how will you determine a rigid constitution or flexible constitution on the basis of amendment procedure. आमे संविधान संशोधन प्रक्रिया माध्यम जानी परिबा जे गोटे constitution rigid ना flexible. If the ordinary law and constitutional law amended in the similar process, that is known as a flexible constitution, and the best example of flexible constitution is known as a British constitution. The most difficult constitution or rigid constitution known as the American constitution, first written constitution in the world, and there is a difficult process of amendment, because in a rigid constitution the amendment procedure very very difficult, because ordinary law and constitutional law amended in a separate way. साधारण आईन सांविधानिक आईन संशोधन करिवार प्रक्रिया अलग रही। साधारण आईन पर सिंपल मेजोरिटी दरकार, किंतु सांविधानिक आईन संशोधन करिया को हेले 2/3 मेजोरिटी आवश्यकता अछि, 2/3 सभ्य प्रेजेंट एंड भोटिंग ए व्यवस्था करा जायछि। तेणु इंडिया होछि मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आमर आर्टिकल 368 368 धारा रे तीनोटी क्लॉज रखा जायछि। सिंपल मेजोरिटी, वी कैन चेंज समथिंग इन द सिंपल मेजोरिटी, देन 2/3 मेजोरिटी, then 2/3 majority and half of the state legislature should pass the bill to change the constitution. So तीनोटी प्रक्रिया आमर एथि रही। तेणु आम जना पड़ो भारत वर्ष में आम जब जापे भारत वर्ष में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन और सम्मिश्रण घटी। बिसाइड्स दैट इन इंडिया वी हैव ए बाइकैमराल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय व्यवस्था अच्छी। द्विसदन गोटे राज्यसभा, गोटे लोकसभा। So Indian legislature contains 2 houses. Article 79 of the Indian Constitution prescribes that the legislature of India consisting of the president and the lower house of the parliament is known as Lok Sabha, and the upper house of parliament is known as Rajya Sabha or Council of States. तेणु ये व्यवस्था रही। तेणु आम संविधान आम जो देखा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आपको लेकिन आम लेजिस्लेचर गठित है। ये दुईटी सदन अच्छी राज्य मान, बिकज द स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राज्यसभा इज 250. Out of the 250, 12 people are chosen by the president, persons having knowledge in the field of art, literature, science and social service. कला, विज्ञान, समाज सेवा एवं विज्ञान क्षेत्र, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में ज्ञान थिबा लोक मानकु राष्ट्रपति मनोनीत करें। आउ जो 238 रहे 230 दे आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। तेणु दिस इज दी एंड दे आर टेन्योर इज 6 इयर्स। समस्त राज्यसभार टेन्योर होची
it is a permanent chamber, but the members they can chosen for 6 years. Besides that, we have lower house Lok Sabha, it is representing on behalf of the people. We are directly giving our vote to different candidates and choose our representative to the parliament, particularly Lok Sabha. And Lok Sabha is consisting of 543 members, their tenure is 5 years, and it is distributed according to the population, whether it is Rajya Sabha or Lok Sabha. In India, we have allotted seats to different states or units according to their population. तेणु लोकसभा को आम देखा ओडिशा रु 21 जन जाउथिबा बेले राज्यसभा को 10 जन जाउछन्ति. सबुठारु हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन रही उत्तर प्रदेश 80 जन एमपी लोकसभा को जाउथिले 30 रु अधिक एमपी राज्यसभा को जाउछन्ति. तेणु इंडिया रे हमर बाइकैमरल लेजिस्लेचर अछि बिकॉज इट मेंटेन्स द फेडरल बैलेंस, संघीय संतुलन रक्षा करिया पई ये व्यवस्था करा जायछि. The constitution is supreme because whether it is the state governments or union government or union legislature or state legislature, they should not make any law that will violate any provisions of the constitution. संविधान कौन सी नीति नियम को violate कला भलिया किछि आईन प्रणयन करि पारि. If they will violate, then there is the Supreme Court is there because it is the guardian of the constitution, it is the protector of the constitution. It will declare the law made by the legislature of the states or union, that is known as ultra vires, or that can be rejected outrightly by the judiciary of the country, because in India we have a Supreme Court and a hierarchical organized judicial system. So, besides that, in the constitution there is a division of powers. We can find that there is a division of powers. Powers are divided on the basis of because in a federal form of there is division of powers. In a federal form of a government, we will find that there is the power is divided on the basis of a territory and subjects. Territory भूखंड दृष्टिकोण, जोग्राफिकाली एरिया दृष्टिकोण एवं विषय वस्तु दृष्टिकोण क्षमता गुड़िक बंटा जाए. केंद्र सरकार केते क्षमता हम, राज्य सरकार केते क्षमता हम, आंचलिक सरकार मानकर केते क्षमता. सो दैट इज clearly mentioned. So, that is why in India we have a territorially, because the whole the union government can make law throughout the territory of India, and the state governments can make law within their respective territories. Besides that, so we have a division of powers, and there is the list system prescribed in the 7th schedule of the constitution. In the list system you will find that 7th schedule रे आमे पाइपर अनुसूची पाइपर जे क्षमता गुड़िक केमिति बंटा जाइछि सब्जेक्ट दृष्टिकोण तीनोटी से लिस्ट करा जाइछि. गोटे हला यूनियन लिस्ट, गोटे हला स्टेट लिस्ट. यूनियन लिस्ट कंटेन्स 98 सब्जेक्ट्स of national importance and international importance, and just like that the state list contains regional and local important subjects are given in the state list, and it is 59 items. Recently it is changed, that is why do not be confused. And besides that, in the concurrent list there is 52 items contains, because according to their importance. And in the union list, the union government can make law, and it is supreme. In the state list, the state government can make law, but sometimes the union can make law relating to the state list. I will discuss later on. And then there is a concurrent list, both the union government and the state government can make law relating to the union the concurrent list, जोटा जुग्म तालिका आम कहे मिलित तालिका कहे से केंद्र सरकार राज्य सरकार उभय आईन प्रणयन करें. इफ देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, द यूनियन लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ. केंद्र सरकार आईनटा बलवत्तर रहिबो, राज्य सरकार आईनटा रिजेक्ट. तेणु डिविजन ऑफ पावर इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ subjects. Besides that, we have dual administration or dual government like central government and state government. आमे भारत वर्ष रे देखिबा आमर केंद्र सरकार अछि, राज्य सरकार अछि, ता सहित आंचलिक सरकार भी अछि. यदि रूरल एरिया देखा पंचायत राज सिस्टम रे जिला परिषद, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल रे अछि, तापर गाँ गहली रे ग्राम पंचायत भी अछि. अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जदि देखिबा corporation of municipality NSC मध्य रही. So, we have a dual administration like union government and state government. Two sets of governments are there, and the union government
we are the citizens of the country are governed and administered by two types of a government, one is the union government and then the state governments. So, besides that we have independent and impartial judiciary. In India we have the judiciary is hierarchically organized. Top in the, if we look to the pyramidal structure, जदि आमे गोटे पिरामिड सदृश जदि गोटे त्रिभुज आकार रे देखिबा ताहले त्रिभुजर पूरा टीप रे रही सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य मानक रही हाई कोर्ट एवं तल स्तर देखा जदि डिस्ट्रिक्ट लेवल दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. सो इट इज हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बिकॉज इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर, डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो वन whether union government or state government, they cannot violate the provisions of the constitution. Besides that, it is the protector of fundamental rights of the citizens. Fundamental rights is the basic rights of the citizens of the country, and that should not be, they must not be taken away by the union government or state governments. केही नहीं पारिबे नहीं जे ताको भायोलेट करिवा. The citizen has a power to move directly to the Supreme Court for its protection according to article 32. The writs are provided by the writs are provided in the article 32, the writs of habeas corpus, mandamus, certiorari, quo warranto, prohibition. Besides that, if a citizen is not able to go to New Delhi where the Supreme Court is there, but he can move to the high courts for protection according to article 226 226 धारा बल से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को राज्य में जापर तार फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट. बिसाइड्स दैट आवर जुडिशियरी द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ लॉ, श्रेष्ठ व्याख्याकार, आईन श्रेष्ठ व्याख्याकार. एवं इफ देयर इज एनी ग्रे एरिया, कोठे क्लियर कट ना, आईन रे कोठे क्लियर कट ना, शेष कथा कहबार अधिकार होची सुप्रीम कोर्ट अच्छी, सर्वोत्तम न्यायालय रही. सो दैट्स व्हाई इट इज द फाइनल इंटरप्रिटर ऑफ लॉ and it will examine, it will clarify the doubts if there is any relating to any provisions of the constitution. Besides that, if the state government or union government make any law which is going against the interest of the people, going against the interest of against the provisions of the constitution, they can appeal or they can challenge before the Supreme Court, and the Supreme Court has a judicial review power. न्यायिक पुनः अवलोकन क्षमता ता हाथ रे अछि, जाद्वारा कि से कौन करिवो ना जदि सरकार भायोलेट कर चैलेंज कले जुडिशियल रिव्यू हो पार. चैलेंज न कला पर्यंत जुडिशियल सो मोटो से नहीं विचार कर ना. तेणु एनी सिटीजन, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन कैन चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दैट the particular act made by the union government or state government that is violate the provisions of the constitution, and the Supreme Court has a power to review it, analyze it, and if it violates the, it found that if it found that the provision is violated, then it can declare the law null and void. ताकू रिजेक्ट कर देबार क्षमता रही भारतीय संविधान. तेणु जुडिशियल रिव्यू पावर आमर भारतीय संविधान रे रही जोड़ा कि न्यायालय रही. बिसाइड्स दैट, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट्स एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन वन साइड, देयर इज यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अदर साइड, एंड बिसाइड्स दैट स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, दैट डिस्प्यूट विल सॉल्व बाय द judiciary, the highest court of the land, the Supreme Court of India. So that's why if any conflict arises, so because as there is a division of power, so conflict may be arise because someone may encroach the rights of others, some areas of others, as a result of which there is a possibility of a conflict relating to different issues. So as a result of which the dispute will be solved by the Supreme Court of India. This is all about relating to the different features of Indian federalism. Let us discuss about the union state relations. For smooth conduct of administration, for law making, for imposition of a tax, so the framers of the constitution has suggested that there must be good relation, smooth relation between the union and the states. In some books you will find that there is center state relations, but center state relation is not the correct thing, because if you go through our constitution, which is written by Subhash Kashyap, the then Secretary General of Lok Sabha, you will find that he explains that we should use the concept of a union state relation instead of a center state relations, because union means the whole circle. Union means the whole circle,
बट सेंटर मीन्स ए पार्टिकुलर पॉइंट आम गोटे वृत्त करवा से वृत्तर केन्द्र बिंदुटा को हूँ केन्द्र कहुए केन्द्र सहित राज्य मानकर संपर्क नहीं द होल सर्कल सहित आम पार्टर संपर्क ये कथा सी मेंशन करछंती तेणु ताकू नहीं आम रिलेशन को लेकिन यूनियन स्टेट रिलेशन कहवा ठीक हम संघ राज्य आमर संपर्क एवं यही संपर्क को तीन भाग में बांटी दि जाइए गोटे लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप देन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप जदि आम लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप देखा एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देखा इट इज गिवन इन पार्ट 11 of the Indian Constitution. Legislative relations are given from article number 245 to 255. जदि administrative relation गुड़िक देखा so it is given in 256 to 263. जदि financial relation अर्थनैतिक संपर्क को देखा it is given in part 12 of the Indian Constitution. But legislative and administrative relation given in part 11. But financial relations are given part 12 of the Indian Constitution from article 264 to 300A पर्यंत रही से ओके सो टुडे लेट अस डिस्कस अबाउट the concept of union state relations relating to legislative relation व्यवस्थापिका संपर्क पर आमे आलोचना करिबा आमे जदि legislative relation देखिबा ताहले so far as legislative relations are concerned the Parliament of India can make law relating to the items given in the union list on the basis of a territory. If you look to the basis of a territory, the Parliament of India can make law throughout the territory of India, and even the citizens living abroad those throughout the territory of India. Besides that, the citizens living abroad जो भारतीय माने बाहर देश रोचंती बा एनआरआई माने रोचंती तांको पाई मध्य आईन प्रणयन करि परिबो एवं तांकर संपत्ति बाड़ी उपर मध्य आईन प्रणयन करि परिबो एंड बिसाइड्स दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉ और द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द रिलेटिंग विदिन द टेरिटोरी ऑफ द स्टेट तार निजर सीमा भितर से आईन प्रणयन करे तार भौगोलिक सीमा भितर से आईन प्रणयन करिवो एवं कार्यकारी सेही तार भितर हबो सो सपोज गोटे एग्जांपल निया जाऊ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली जो आईनटा करिवो सेटा ओडिशा भितर काम करिवो किंतु सेटा बिहार किंबा अन्य राज्य जो अच्छी बा तमिलनाडु हो बा अन्य राज्य जो अच्छी सेटा का प्रति लागू हेबो नै महाराष्ट्र सरकार जो आईन प्रणयन करिवे सेटा महाराष्ट्र सरकार सेही तार टेरिटोरी भितर काम करिवो अन्य राज्य पे सेटा प्रযোज्य हेबो नै तेनु टेरिटोरियल दृष्टिकोण रु एई सब आईन प्रणयन बिसाइड्स दैट देयर मे बी ए क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट द so far as so territorial jurisdiction is given in article 245. Parliament can make law for the whole country for Indian citizens and their property situated in any part of the world. State legislatures legislate jurisdiction is limited to the territory of the state concerned. Besides that, there is certain exceptions. Does the Parliament enjoy absolute law making power under article 245? No, there is certain exceptions. For example, under article 240. So in 4 union territories like Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, the President of India has a power to frame regulations for their peace, prosperity, progress and good governance. भारतर राष्ट्रपति चाहिए यही राज्य मानक पई नीति नियम प्रणयन करि परिबे एई जो यूनियन टेरिटोरी बा केंद्र शासित अंचल पई से आईन प्रणयन करि परिबे बिसाइड्स दैट जदि आमे 5th शेड्यूल एवं 6th शेड्यूल को देखिबा ताहले 5th शेड्यूल कौन कहूँ ना अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर ऑफ शेड्यूल एरियाज हैव द पावर टू मेक लॉ फॉर द एरियाज कवर्ड अंडर 5th शेड्यूल एंड कैन डिक्लेयर दैट पार्लियामेंटरी लॉज विल नॉट बी अप्लाइड इन द एरियाज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दरकार पड़े जो 5th शेड्यूल जो राज्य गुड़िक आसुंच जो ट्राइबल एरिया गुड़िक आसूची तापाई गवर्नर पार्लियामेंटर आईन को इम्प्लीमेंट करिपारंती न करिपारंती गोटे निर्दिष्ट समय सेमिति 6th शेड्यूल कहुई 6 नंबर सूची आमर कहुई जे पार्टिकुलरली स्टेट्स लाइक आसाम मिजोराम मेघालय एंड त्रिपुरा से राज्य रे अनलेस दे आर मोडिफाइड एंड डायरेक्टेड बाय द गवर्नर ऑफ दीज स्टेट्स तो यूनियन लॉ विल नॉट बी वर्केबल देयर विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड देयर तेणु यही 3टा होची आमर एक्सेप्शन रही सो फार एज ए टेरिटोरी इज कंसर्न सो फार एज द सब्जेक्ट प्रिंसिपल इज कंसर्न आज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट देयर आर 3 लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल वन इज यूनियन लिस्ट
that is contains 80 items. Then state list, it contains 59 items, and then concurrent list, it contains 52 items. In the union list, you will find that national and international subjects are given in the union list, like defense, like foreign policy, like security, like atomic energy, war and peace, United Nations Organization, Reserve Bank of India, etc. सेमती स्टेट लिस्ट जो गुड़ा देखा आम राज्य दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण जो विषय गुड़िक अच्छी से गुड़िक स्थानित करा जायछि. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दी एग्जांपल्स लाइक प्रिजन रिफॉर्म्स, लाइक पॉलिसी, लाइक लॉ एंड ऑर्डर, लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जोड़ा पंचायत राज, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राज्य सरकार मैंने करेंगे, तापर आईन प्रणयन करेंगे. एगुड़ा तांकर जुरिस्डिक्शन रही. बिसाइड्स दैट कंकरेंट लिस्ट रे जोड़ा जुग्म तालिका कहूचे सेगुड़ाक समस्ते बा केंद्र सरकार और राज्य सरकार आईन प्रणयन करेंगे. बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग द कंकरेंट लिस्ट. एंड if there is a contradiction between the union law and the state law, then union law will prevail over the state law. एगुड़ाक हो पार. तेणु आम concurrent list सब्जेक्ट्स जो गुड़ा एजुकेशन अच्छी, फॉरेस्ट अच्छी, मैरेज एंड डिवोर्स अच्छी, ये अनेक जिनस रही. बर्तमान आम देखा आस ये जो लिस्ट बाद जदि इफ देयर इज एनी आइटम्स रिमेन्स अवे फ्रॉम दीज थ्री लिस्ट और एनी न्यू सब्जेक्ट्स कम अंडर दिस अंडर जदि कौन सी विषय वस्तु ये तीनोटी लिस्ट को छाड़देला ये जो चुक्ति बा जो तालिका दि जाए बाद रहीगला ताहले सेगुड़ाक ताकू कह रेसिडुआरी पावर्स. रेसिडुआरी पावर्स इन अदर फेडरेशंस ऑफ द वर्ल्ड यू विल फाइंड दैट रिमेन्स विथ द स्टेट गवर्नमेंट्स और कैंटोनल गवर्नमेंट्स लाइक स्विट्जरलैंड. कैंटन स्विट्जरलैंड रे राज्य गुड़ को कैंटन कहती, कानाडा ताको प्रोविंस कहुए, आम इंडिया रे स्टेट कहूचे, अमेरिका रे मध्य आम राज्य गुड़ को आम स्टेट कहूचे. ये रेसिडुआरी पावर्स गुड़ा अन्य संघीय व्यवस्था रे अवशिष्ट क्षमता गुड़िक राज्य सरकार को दि जाए. किंतु भारत गोटे देश, भारत रे आम कौन कर आर्टिकल 248 रे एटा एम्पावर करछि यूनियन पार्लियामेंट को बा केंद्र सरकार को क्षमता दि जाए सी आईन प्रणयन करेंगे. रेसिडुआरी पावर. There is a certain exceptional situations, though the powers are divided according to their importance, but sometimes the union government can make law relating to the state list. राज्य तालिका रे से चाहिए विभिन्न प्रकार आईन प्रणयन करेंगे, ताकू मध्य सुपरसीड करेंगे. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक सर्टेन एक्सेप्शनल पावर ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन ऑन नेशनल इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 249. भारत संविधान जातीय स्वार्थ जदि आवश्यकता पड़े ताहले आर्टिकल 249 रे क्षमता दि जाए, स्पेशल पावर दि जाए राज्यसभा को. इफ द राज्यसभा थिंक्स दैट देयर इज ए आइटम कंटेन्स इन द स्टेट लिस्ट व्हिच हैज इट्स नेशनल इंपोर्टेंस एंड पास्ट इट विथ 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, द पार्लियामेंट विल गेट पावर टू मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट लिस्ट. अर्थात यहाँ हूँ स्वतंत्र क्षमता राज्यसभार. राज्यसभा जदि चिंता कला जे राज्य तालिका रे नॉर्मल टाइम रे कहूँ, जदि नॉर्मल टाइम रे चिंता कला जे कौन सी विषय वस्तु गोटे राज्य तालिका रही जाए जातीय दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण से आईन प्रणयन करिया पड़ो, ताहले जेतिकी सभ्य संख्या थिबे तार 2/3 संख्या द्वारा पास करवा दरकार एवं आलापर पार्लियामेंट बर्तमान क्षमता प्राप्त है से आईन प्रणयन करें. सो दिस इज आर्टिकल 249. देन आम जब आउ देखा abnormal situations like emergency, you have 3 types of emergency in the Indian constitution. Article 352 national emergency, Article 356 state emergency, it is otherwise known as president's rule, it is otherwise known as governor's rule. आम तीनोटी ना तार अच्छी राज्य जरुरीकालीन परिस्थिति, ताको राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति जेहेतु डिक्लेयर कर गवर्नर जेहेतु शासन कर गवर्नर्स रूल कहुच्छे. तेणु ये तीनोटी जितेबाला बलवत्तर थिबो सेतेबेले 250 धारा क्षमता दि जाए केंद्र सरकार को बा यूनियन पार्लियामेंट को, इट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट लिस्ट. से समय द यूनियन गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एनी डायरेक्शन टू एनी स्टेट. राज्य मान को विभिन्न प्रकार डायरेक्शन बा से निर्देश दे पारिबो एवं राज्य माने सेटा को मानिया को बाध्य. जो राज्य रे प्रेसिडेंट्स रूल लगी गवर्नर्स रूल लगी स्टेट इमरजेंसी 356 रे लगी से समय केंद्र सरकार से राज्य आईन तो प्रणयन करेंगे, ता सहित तार बजेट पास कर व्यवस्था करेंगे. यहाँ आर्टिकल 255. तेणु एथुर जना पड़ी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी द यूनियन कैन मेक लॉ रिलेटिंग द स्टेट लिस्ट. बिसाइड्स दैट लेजिस्लेशन विथ द रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more स्टेट, आर्टिकल 252 252 धारा दि जाए
2 or more states, if he requests to the union government to make law relating to the state list, then the union government can make law relating to the concerned states, and the law will be applicable to the specific states who are requested to the union government. जो राज्य सरकार माने अनुरोध करिसेंती जे तांको पय आईन प्रणयन करिया पय सेही राज्य सरकार मानक पय से आईनटी कार्यकारी हबो, एटा आर्टिकल 252 रे रहिछि. बिसाइड्स दैट, to give effect to an international treaty or agreement, if the situation demands, the union government or union parliament can make law relating to the state list, and because of that, if the states are affected, then the states have no right to raise voice against the union government or union parliament. For example, Beruberi territory आमे ईस्ट पाकिस्तान को सेतेबेले देइथिले, वर्तमान हो बांग्लादेश जहाँ कहुच्छी, और सेतेबेले आवश्यकता पड़ा केंद्र सरकार आईन प्रणयन करिकी बेरुबेरी टेरिटोरी को ईस्ट पाकिस्तान को देइथिले. सो एथुर जना पड़छि पार्लियामेंटर क्षमता अछि अंतर्जातीय चुक्ति को कार्यकारी करबा पई से दरकार पइले आईन प्रणयन करिवो. ता द्वारा जदि कोनोसी राज्य अफेक्टेड हैला बा तार एरिया अफेक्टेड हैला ताहाले सेमाने वॉइस रेज करि परिबे नाही. बिसाइड्स दैट, जदि आमे देखिबा प्रेसिडेंट्स असेंट टू बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, केते क्षेत्र रे आमे जदि देखिबा पावर राष्ट्रपति क्षमता अच्छी सी राज्य बिल गुड़ी को से सिग्नेचर करें. फॉर एग्जांपल सर्टेन इश्यू दोज रिलेटिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, imposition of certain taxes are to be reserved by the governor according to article 200. 200 धारा रे गवर्नर पर क्षमता अच्छी राज्य व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत होता आईन जदि एटा स्पेसिफिक हाईकोर्ट रो सीमा भीतर को हस्तक्षेप कर होची किंबा कौन सी टैक्स बा नेशनल इंपोर्टेंस रिलेटिंग टू टैक्सेस रिलेट करुची, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपोर्टेंस रिलेट करुची, ताहले से समय गवर्नर चाहिए गोटे राज्य बिल को बा राज्य विधानसभा रे पालित होबा बिल को से रिजर्व करके प्रेसिडेंट पे कंसेंट में रखिपारे. सो इट सीम्स दैट द गवर्नर कैन रिजर्व ए बिल फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200, बट द प्रेसिडेंट हैज ए पावर to may give his assent or may not give his assent, may reject it according to article 201. 201 धारा अच्छी राष्ट्रपति चाहिए ताकू रिजेक्ट करें, ताकू बा किल करें, दिस इज नोन एज द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, किंबा ताकू सिग्नेचर करें एवं ये जिनस गुड़िक कर अधिकार तांकर रही. बिसाइड्स दैट आमे जदि देखिबा आउ जो अन्य एक्सेप्शनल पावर गुड़ा अच्छी, पावर ऑफ द यूनियन टू रिकॉग्नाइज एंड चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, आमे जदि देखिबा आर्टिकल 3 को देखिबा, आर्टिकल 3 को देखिबा ताहाले सेथिरे पाइबा द पार्लियामेंट चाहिए इनक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट. सो युड़ाक कर अधिकार आर्टिकल 3 ताकू दि जाइए. पावर ऑफ द यूनियन टेन नेम ऑफ द स्टेट, राज्य सरकार जदि तांका राज्य ना हो कौन सी जिनस ना परिवर्तन करने चाहते से ताहले से रिक्वेस्ट जदि कले ताहले केंद्र सरकार सेटा करें. पावर ऑफ द यूनियन टू एस्टाब्लिश और आबोलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर्टिकल 169, जदि 2/3 मेजोरिटी विधानसभा पास होगी कौन से आईन गला जे आम राज्य में विधान परिषद नहीं, ताहले सेटा पार्लियामेंट मध्य ताको जदि कनकरेन्स कला ताको अनुमति देला ताहले से मध्य आबोलिश एवं क्रिएट जो अच्छी से विधान परिषद अच्छी से ताको आबोलिश करिपारिबो, जोठे नाही सेठे क्रिएट करिवार अधिकार. पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन यूनियन टेरिटोरीज, पार्लियामेंटर क्षमता अच्छी यूनियन टेरिटोरी पे आईन प्रणयन करबा जो राज्य गुड़िक 240 धारा अंडर आसुना किंबा जो गुड़ाक 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल अंडर आसुचंती. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटिंग टू योर यूनियन स्टेट रिलेशंस, एंड इफ यू लुक और एनालाइज देन यू विल फाइंड दैट द यूनियन इज डोमिनेंट in the sphere of legislative matters, and the union government is more powerful. That's why many more times there is a tussle between the union government and the state governments. This is all about relating to the union state relations relating to legislative matters. Thank you for your patient hearing. Thank you.